इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। स्विच ऑन दिस। कैसे हो आप लोग? भैया ठीक है। अभी कहाँ तक पहुंचे हैं उसमें सिलेबस में? आप एनसीईआरटी तो पूरा हो गया था ना? जीएससी का स्टार्ट नहीं करी आपने? कब से कर रहे हैं आप लोग? आफ्टर दिवाली और जीएससी। आपका टारगेट ईयर क्या है? 27। ठीक है, गुड। तनिष्का इज हियर। गुड इवनिंग तनिष्का। गुड इवनिंग ईशान। गुड इवनिंग। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद व्हाट कल हम लोग क्या कर रहे थे। फर्स्ट वी हैव टू रिवाइज दैट। बताइए। हाँ, वेस्टर्न घाट्स किया हमने, राइट? वेस्टर्न घाट्स वाज कंप्लीटेड और नॉट? पूरा कंप्लीट हो गया था। ईस्टर्न घाट्स हो गया था, राइट? अब हमें कहाँ मूव करना है? प्लेन्स पे, कोस्टल प्लेन्स पे। ठीक है, सो प्लेन्स क्या है आपके? हाउ द प्लेन्स आर फॉर्म? पेज द पीपीटी और इंपोर्ट। बताइए कैसे फॉर्म होते हैं आपके कोस्टल प्लेन्स? कहाँ पर है? एक सेकेंड टीचिंग। हाँ, अब बताइए क्या कह रहे हो आप? सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स। क्या है सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स? हाँ, हम्म, अच्छा, और इरोशनल एक्टिविटीज, बस इतना ही? तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, हाउ द प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स आर फॉर्म्ड। वेरी गुड। सबमर्जेंस एंड इमर्जेंस कैसे फॉर्म हुए हैं? व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ सबमर्जेंस एंड इमर्जेंस? क्या होता है ये? दैट विल डू टुडे। ठीक है, पहले लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कोस्टल प्लेन्स। राइट डाउन। शी इज सेइंग समथिंग मैम। Conglomeration of sediments brought by rivers. Yes, that is for the northern plains, Tanishka. That is for the northern plains. We'll do today coastal plain ka formation. Write down coastal plains formation. Write down coastal plains formation. That is also one of the reason that Tanishka is saying. पहले हम easier reason लिखते हैं, ठीक है? Write down coastal plain forms from deposition of coastal plains forms from deposition of, I've forgotten my pen. Where it is? Okay, here it is. ठीक है. Now write down coastal plains form from deposition of sediments. It is formed from deposition of sediments by rivers. Deposition of sediments by rivers. Next, rivers, ocean currents. Ocean currents. It is formed by rivers, ocean currents. I need a blank slide here in it. Give me a moment. नहीं कर लेते, ठीक है? If you are not getting without wasting time. Yep. Okay. Now write down coastal plains form from deposition of sediments by rivers, ocean currents and wave erosion. As well as from geological processes, as well as from geological processes, geological processes like land uplift, like land uplift,
comma, sea level changes, and exposure of former continental shelves, and exposure of former continental shelves. Next, write down. These processes lead to formation of broad, comma, flat areas of land. It leads to formation of broad, flat areas of land, broad, flat areas of land along the coastline, often rich in, often rich in often rich in fertile, comma, loose, comma, sandy, and muddy sediments suitable for agriculture. Muddy sediments suitable for agriculture. Can you all see the slides online, students? Just forgotten to zoom out this. Okay, I hope you can see now. Now write down the processes of formation. Write down the processes of formation. Excuse me, ma'am. Yes, Ma'am, could you Samishta? please repeat after suitable for? Yes, suitable for agriculture and other uses. For agriculture and other uses. Next is processes of formation. Coastal plains are created through a combination of coastal plains are created coastal plains are created through the combination of coastal plains are created through the combination of geological processes. First is sediment deposition. इसको explain करेंगे हम because the question can come how the coastal plains are formed. So first is your sediment deposition. Write down it as a heading, and then you will write the explanation of it. Sediment deposition. Write down under it river and ocean currents. River and ocean currents. River and ocean currents. उसके अंदर आप लिखोगे rivers carry vast amount of sediment. Rivers carry vast amount of sediments into the sea, and when they reach the coast, river carry vast amount of sediment into the sea, and when they reach the coast, comma, the river slows down, comma, causing the sediments causing the sediments causing the sediments to settle and build up, causing the sediments to settle and build up
causing the sediments to settle and build up over a period of time. Further forming fertile plains and deltas. Further forming fertile plains and deltas. नेक्स्ट लिखेंगे मरीन प्रोसेसेस, इसी के अंदर मरीन प्रोसेसेस. Write down the second point under this only. Second point, marine processes. Waves and other marine activities. Waves and other marine activities can deposit waves and other marine activities can deposit sediment can deposit sediments along the coastline comma contributing to the land mass, comma contributing to the and widening the coastal plains, contributing to the land mass and widening the coastal plains. So your Western Ghat is like this. Sorry, your Western Ghat is here, which I'm drawing, and after that you are having this, which I'm shading, is your plains. So this is your coastal plain. Okay. Next, write down erosion. That is, जैसे आपने sedimentary deposits लिखा है, फिर you will write the second. इसके अंदर नहीं, अब आपको अलग से point लिखना है. Second, erosion. Write down erosion. Second में लिखिए erosion. Write down erosion. इसमें second point. इसके अंदर फिर आएगा आपका, वैसे वो सेडिमेंट्री एक्शन है, वो फर्स्ट पॉइंट था, उसके अंदर फिर 2 पॉइंट्स थे आपकी रिवर और ओशन करंट्स एंड देन योर मरीन प्रोसेसेस. ये सब पॉइंट था उसका सेडिमेंट्री डिपोजिशन का. फिर आपका सेकंड पॉइंट है विच इज योर इरोजन. आपको डिपोजिशन में डिपोजिशन अलग है, इरोजन अलग है, दोनों चीजें अलग है. डिपॉजिट मतलब कि आप रिवर आ रहा है एंड सिल्ट लेके एंड देन दे आर डिपॉजिटिंग. अब जरूरी नहीं है सिर्फ सिल्ट के प्रोसेस से आपका डिपॉजिशन हो सकता है कि वेव्स के, बिकॉज वेव्स आर आल्सो ब्रिंगिंग लॉट ऑफ सेडिमेंट्स, इट कैन हैपन ड्यू टू दैट, इट कैन हैपन ड्यू टू ओशन करंट. सो देयर आर मल्टीपल वेज थ्रू व्हिच द सेडिमेंट डिपॉजिशन कैन हैपन. सो वन इज योर डिपॉजिशन. अब डिपॉजिशन और इरोजन में फर्क है, प्लीज गेट दैट. योर डिपॉजिशन इज that the rivers are coming and with a high speed in the youthful stage, then they come in the mature में उनका speed कम हो जाता है, और फिर जब आपका old आता है then they slows down where near the deltas, and then they slows down. क्या होता है फिर deposition आपका बढ़ने लगता है, ज्यादा बढ़ने लगता है, and then boulders and their deltas they are formed near Sundarbans जैसे आपको दिखता है अभी. ठीक है, and along same case happens here also. ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी आपकी rivers है, if I want to mark. Here you are having Narmada, so Narmada will deposit here. You are having Tapi, you are having Shivasti, they will deposit all here. But here you are having more number, the rivers are coming from here on the Western Ghats, but they are depositing in the Bay of Bengal. So you have more rivers on the eastern sides. What kind of rivers that we have? One is your Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. Voluminous, right? And also we also call Godavari as Dakshin Ganga, right? So they are depositing on the eastern side. Done. Write down मरीन प्रोसेसेस. कहाँ पे लिखा आपने अभी? इरोजन में. ओके, वेव एक्शन लिखिए इसमें. इरोजन में लिखिए वेव एक्शन. इरोजन में लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट वेव एक्शन.
वेव एक्शन। इसके अंदर लिखेंगे वेव इरोजन कैन रिड्यूस रॉकी कोस्ट लाइन। वेव इरोजन कैन रिड्यूस rocky coastline can reduce rocky coastline, comma creating more shallow sedimentary rocks. More shallow sedimentary rocks, creating more shallow sedimentary, I'm sorry, sedimentary coastline it is. By mistake I'm saying rocks. Write down coastline, sedimentary coastline, which are known as coastal plains. Which are known as coastal plains. Why sedimentary coastline I said? How your sediments are formed? If I talk about the sedimentary soil, कैसे बनता है sedimentary soil? One of the easiest definition of sedimentary soil is weavers आएंगी, they will bring out this, they will carry the silt and they will deposit. यहाँ पे जो आपका first layer है, which is visible, your 70% of the earth is made up of sedimentary rocks only, which is evident also, right? They will bring the sediments and deposit here. This is called sedimentary coastline. Now read out this line again. Wave erosion can reduce the rocky coastline. Rocky coastline मतलब क्या है? अगर यहाँ पे कुछ rocks हैं या पे कुछ भी है आपका, ये अगर this will come, rivers will come and they will try to erode it. Wave action will try to erode it. Rivers will try to erode it. और क्या बना देगा इसको? Fertile plain बना देगा. ठीक है, अगर कुछ है भी आपका topography ऐसा है which is not very plain, it is having uphills, so what will happen? It will become flat through the help of rivers and wave action. It will erode it. That's why written creating more shallow sedimentary coastline. Done. Next is emergence. ये आपका third point है. Write down emergence. Write down emergence. That is your third point. Emergence. Emergence. Write down the emergence. Land uplift. Land uplift. Write down. When land masses are uplifted or the sea level drops, when the land masses are uplifted or sea level drops, comma, a portion of the former continental shelf can emerge, comma, creating a new broad coastal plain. When the land masses are uplifted, or the sea level drops, या तो लैंड मास अपलिफ्ट हो जाए या सी लेवल अपने आप ड्रॉप, दोनों में से एक ही काम होगा, तभी क्या होगा? डिस्टेंस आएगा सी लेवल में और उसमें. इमर्जेंस मतलब क्या है? दैट द लैंड इज लिटिल अबव देन द सी, राइट? अ पोर्शन ऑफ द फॉर्मर कॉन्टिनेंटल शेल्फ कैन इमर्ज, creating a new broader coastal plains. Can emerge, creating a new broader coastal plains. Now try to understand this point. देखिए, take a example. For example, this is your water, okay? Done. अब क्या होगा? That shelf, have you read the shelf
व्हाट आर शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, एबिसिल प्लेन? कितने लोगों ने पढ़ा है? कितना याद है? आपने पढ़ा है? आपको नहीं पता, ठीक है, कोई बात नहीं। जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, सी you are having, after your land gets over here, your ocean starts, then you are having a shelf, उसके बाद आपका आएगा स्लोप, उसके बाद एबिसिल प्लेन एंड देन फर्दर। अब जब ओहो देन व्हाट हैपेंस, यहाँ तक अभी आपका क्या था, ये वाटर से कवर्ड था। मैं ग्रीन पेन से आपको दिखा रही हूँ, दिस इज कवर्ड विद वाटर, दिस इज कवर्ड विद वाटर। द मोमेंट इट विल रिसीड, फॉर एग्जाम्पल वाटर नीचे चला गया, वन वन कुड बी वन way of doing it, right? The water can, क्या लिखा है उसके अंदर, water level can drop, एक ये हो सकता है, दूसरा ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। जैसे वाटर लेवल ड्रॉप किया, क्या हो जाएगा, कैन आई से नाउ माई वाटर लेवल विल बी seen not here but it will be started to show from this side, क्या हो रहा है, started to show from this side, क्योंकि सी लेवल ड्रॉप हो गया। So can I say that now this part is also visible? This is what? Continental shelf. So can I say that this continental shelf is visible to me? So it hasn't been become a part of the coastal plain only. ठीक है, लैंड दिखने लगा, जब लैंड दिखने लगा तो क्या हो जाएगा, वाइडर कोस्ट हो जाएगा आपका। बात समझ में आ रही है, क्या मतलब है इसका? डू नॉट राइट एनीथिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जब तक समझ में ना आए मत लिखा करिए, और अगर लिख रहे हैं तो फिर समझिए उसको, राइट। सो फर्स्ट इज दैट कॉन्टिनेंटल शेल्फ अगर आपका नीचे ड्राउन्ड है, सो द मोमेंट इट इज डाउन, उसको क्या करना है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, स्लोप क्या होता है, अभी उसको भूल जाइए। एक सिंपली ये लीजिए कि एक लैंड मास है जो कि वाटर के अंदर डूबा हुआ है, अब वाटर लेवल नीचे चला गया तो लैंड मास दिखने लगेगा, और आपका जो ये दिस थिंग है ये क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर वाटर है, यहाँ पे इसके अंदर होगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब जब ये वाटर लेवल फॉर एग्जांपल रिसीड हो गया, नाउ यू स्टार्ट शोइंग द, अगर यहाँ तक हो गया तो इट विल स्टार्ट टू शो एंड इट विल गेट वाइडर। डन। नाउ राइट डाउन, इमर्जेंस में ही लिखना है, ठीक है। इमर्जेंस पूरा हो गया, कितने लोगों को समझ आया, एवरीवन अंडरस्टूड इट? ओके, नेक्स्ट लिखेंगे सबमर्जेंस। सबमर्जेंस में लिखेंगे सी लेवल राइज, सबमर्जेंस सी लेवल राइज। सी लेवल राइज में लिखेंगे, what should I write under it, under sea level rise? What is this? Submergence. इसमें क्या लिखना चाहिए मुझे, what should I write? Sea level is getting high, very good. So write down, an alternative process is the rise of sea level, an alternative process is the rise of sea level, the alternative process is the rise of sea level or subsidence, 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 SIDENCE, subsidence। सबसिडेंस का मतलब क्या होता है, सिंकिंग, इट मीन सिंकिंग। अगर लैंड सिंक कर जाए आपका किसके अंदर, वाटर के अंदर, या तो वाटर लेवल, जो वाटर लेवल है राइज हो जाए, या फिर लैंड क्या हो जाए, सिंक कर जाए, दोनों में से एक चीज हो सकता है, इधर थ्रू द एक्टिविटी ऑफ वाटर, इधर थ्रू द एक्टिविटी ऑफ लैंड। लैंड इज यू हैव टू यूज दिस वर्ड ओनली, सबसिडेंस, राइट। डिवाइड कर लीजिए अगर ज्यादा डाउट है इसके अंदर, तो सबसिडेंस मीन सिंकिंग। देन राइट डाउन, an alternative process is the rise of sea level or the subsidence, sinking of the land, comma, which can lead to submergent,
which can lead to submergent coastline. Submergent coastline, which can lead to submergent coastline, comma, though this is less about the creation of new land, though this is less about the creation of new land and more about the drowning of existing features. Drowning of existing features. Done. इसमें से कोई भी डाउट हो just let me know. Submergence is creating a coastal plain. This is also plain, no? So I'm just trying to tell. It's submergence and emergence. अगर कोई भी आपका जो लैंड है सबमर्ज हो जाएगा, व्हाट विल हैपन? अंदर चला जाएगा, ठीक है? डूब नहीं, ऐसा नहीं होता है. डूबने से मतलब ये नहीं है कि उसकी प्रॉपर्टीज वो हो जाएंगी. कंप्लीटली नहीं है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, ठीक है? तो तब भी तो वो इरोड हो रहा है ना. इजंट इट इरोडिंग? इरोड तो हो रहा है ना, बल्कि सब सबमर्ज होकर ज्यादा इरोड होगा हर समय पानी में. हम्म. वो पानी के अंदर जो एग्जिस्टिंग है, which can also go under the water, no? And then it will erode. It will also erode, na? Under the water. Write down. First of all, write down about the coastal plains. So this is just a description about कि coastal plains आपके किस किस तरीके से बन सकते हैं. This is not only with respect to India, otherwise also, ठीक है? But ये what I have made you written is with respect to India as well as the world, right? What can happen around the world? For example, if I say ocean currents की वजह से आपका coastal plain बन सकता है, which is true, okay? So in similar way, it can also form due to submergence. It is also can form due to emergence. It can be formed due to the erosion. It can be formed due to the deposition. These four factors you have to remember. Now write down about the coastal plains. Write down. The peninsular plateau is flanked by FLANKED. The peninsular plateau is flanked by the peninsular plateau is flanked by narrow coastal plains. Is flanked by narrow coastal plain of varied width from north to south, known as west coastal plain, known as west coastal plains, known as west coastal plains and east coastal plains and east coastal plains.
full stop. These coastal plains differ from each other. These coastal plains differ from each other. Full stop. They were formed by deposition action of the rivers. They were formed by deposition actions of the river and the erosional and deposition action of seaways. Of depositional and erosional actions of seaways. Next, write down. According to geologists, comma, the origin of western and eastern coast of India, the origin of western and eastern coast of India may be attributed to the faulting and subsidence of Arabian Sea due to faulting and subsidence of Arabian Sea and Bay of Bengal towards the close of Eocene period. Towards the close of Eocene period. तो कहने का मतलब है जब आपका फॉल्टिंग हुआ, फॉर एग्जांपल ये सब्सिडेंस का मतलब क्या बताया था अभी मैंने, सिंकिंग, ठीक है। सिंकिंग किसका हो रहा है, आई टोल्ड यू अबाउट द फॉल्टिंग व्हिच हैपन इन सिंकिंग ऑफ व्हाट हैपन, सिंकिंग ऑफ अरेबियन सी, right, and Bay of Bengal. Now this happened at what point of time, Eocene. Which period Eocene describes? It's majorly a part of tertiary period. जो आपका टर्शरी पीरियड है, ये सोच के चलिए, ज्यादा पीरियड्स में मत जाइए जियोलॉजिकल पीरियड में, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ कुछ का ही याद रखना है, मैं आपको बता दूंगी। फॉर एग्जांपल अरावली सी, कैम्ब्रियन, आपका प्लेन्स जो आप अभी कोस्टल प्लेन्स पढ़ेंगे, प्लेस्टोसीन, ठीक है, हिमालयस, टर्शरी, कुछ कुछ चीजों का आपको याद रखना है। कोल गोंडवाना के टाइम पे फॉर्म हुआ था, सारा आपको करने की जरूरत नहीं है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो, अदरवाइज बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। कोई जरूरत नहीं है प्लीस्टोसीन, जोरासिक पीरियड, सेनोजोइक पीरियड पूरा पढ़ने की, नॉट रिक्वायर्ड। अगर आएगा तो एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन आएगा, वो भी अब काफी टाइम से नहीं आ रहा है, सो इट्स ओके, ठीक है, डू नॉट बर्डन योरसेल्फ। तो आपको क्या करना है कि सिंकिंग आपका यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, ये आपका फॉल्ट, बिकॉज ऑफ फॉल्ट। अब ये इयोसीन क्या है, इयोसीन लिख दिया है आप, मुझे यहाँ पे लिखवाना चाहिए था टर्शियरी पीरियड, उसी के अंदर आता है इयोसीन आपका, विच इज योर टर्शियरी पीरियड। टर्शियरी पीरियड में क्या फॉर्म हुए थे, हिमालयस फॉर्म हुए थे, हिमालयस वर फॉर्म, और ये न्यूली फॉर्म्ड है, हम इसको यंग बोलते हैं हिमालयस को। नाउ अब जब ये फॉल्ट हुआ तो क्या हुआ, उसके बाद आपका यहाँ पे डिपोजिशन स्टार्ट हुआ, डिपोजिशन गेटिंग स्टार्टेड ऑन द कोस्ट लाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, इंक्रीज, हाँ ठीक है, कर रहे। फैंस चलाने, अब चला दो इसको, मैं बंद कर देती हूँ। हाँ फैन चला लो, आई कैन स्विच इट ऑफ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। Write down, consequently, alluvial deposits, consequently, alluvial deposits consequently, alluvial deposits along this coast are of very recent origin. Along this coast are of very recent origin.
मतलब ये जो सबसिडेंस हुआ था दोनों रिवर्स का, ठीक है, ये भी क्या है एक तरह से, दिस इज व्हाट, प्लेट ही है ना, कौन सी प्लेट की है ये, दिस इज योर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंदर ही आ जाएगा ना, दिस ऑल इज इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। सो नाउ दिस गॉट सबसिडेंस हुआ इसका सिंकिंग, कब हुआ, योर टर्शियरी पीरियड सिंपली आप लिख सकते हो, एंड देन व्हाट हैपेंड, व्हाट डिड आई मेक यू राइट, हाँ, deposition of rivers happened very recently, ठीक है। Consequently, alluvial deposits along this coast are of very recent origin, ranging from, write down, Pliocene, Plio, Pliocene, ranging from Pliocene to recent times, मतलब तब से चलता ही आ रहा है डिपोजिशन, अभी भी डिपोजिशन हो रहा है। राइट डाउन प्लियोसीन, PLIOCENE, प्लियोसीन, Pliocene to recent times. Full stop. These coastal plains have the evidence of, these coastal plains have the evidence of submergence and emergence. These coastal plains have the evidence of submergence and emergence. These coastal plains have the evidence of submergence and emergence. Full stop. The Indian coastal plain may be divided into, the Indian coastal plain may be divided into three following categories or three following parts, three following divisions. First is your Gujarat coastal plain, which is your this one, Gujarat coastal plain. I'm shading the region. This is your Gujarat coastal plains. Sara nahi aayega, only the surrounding part. These are the coastal plains. Only this part will come. This is the Gujarat coastal plains. Then write down west coastal plains. These are your west coastal plains and east coastal plains. If you want to draw the map, आप draw कर लीजिए. You will get a habit also कि कैसे draw करना है. पूरा बनाने की जरूरत नहीं है. Only draw this much. See, draw like this. सिर्फ इतना draw करिए. That's it. और फिर आप यहाँ पे बता सकते हैं. This is your west coastal plain. This is your Gujarat coastal plain. This is your west coastal plain. And this is your east coastal plain. ज्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगता हो शॉर्ट टाइम में देना है तो यू कैन राइट मिड में टाइम पीरियड, कभी फॉर्म टाइम पीरियड फॉर्मेशन लिख सकते हो, प्लियोसीन टू रीसेंट टाइम्स, लाइक दिस. Now write down first about Gujarat coastal plain. Write down Gujarat coastal plain. Talking about this one first, Gujarat coastal plain. Write down the Gujarat plains cover almost, Gujarat plains cover almost, Gujarat plains cover almost the entire state of Gujarat, the entire state of Gujarat. इसमें कीवर्ड इज ऑलमोस्ट, पूरा गुजरात आपका कोस्टल प्लेन पे नहीं बना, ठीक है. एंटायर स्टेट ऑफ गुजरात एक्सेप्ट
The district of Banaskantha, कोई बात, बैठे रहिए. Along with the district of Banaskantha, Banas, B, it is along with the district of Banaskantha, comma, या and लिखिए, Sabarkantha, and Sabarkantha. Next लिखेंगे, write down Sabarkantha and Banaskantha. Next write down it is formed by the alluvial deposits of Sabarmati. It is formed by the alluvial deposits of Sabarmati, comma Mahi, formed by the deposits of Sabarmati, comma Mahi, comma Luni, and numerous consequent streams. ये तो important है ही, please star mark them for prelims. यहीं पे ये तो important है ही for the prelims because these are some of the important rivers. You should know कि साबरमती आपका कहाँ से originate हो रहा है. It is originating and depositing here. ठीक है. फिर लूनी आपका कहाँ से हो रहा है? From राजस्थान से ये लूनी is coming and it is coming here. ठीक है. फिर then is your माही will come and come here. ठीक है. Your Luni is a river which gets dried up. Internal river है, मतलब जहाँ से originate होती है अंदर ही अंदर it gets dissolved. मतलब ephemeral rivers they are. ठीक है. हाँ, ephemeral ही बोलते हैं इनको. Ephemeral. ठीक है. Only this one, Luni. Then it's your Sabarmati and Mahi. All three rivers are there. Ephemeral rivers का मतलब spelling is this. I was just checking the spelling. It's I or E. Ephemeral rivers are those which rises up in the monsoon. You can see them clearly in the monsoon, but the time as the monsoon passes away, the rivers get dry up and then you cannot spot the river any longer for the rest of the year. ठीक है. इसको कहते हैं ephemeral river. So Luni is a ephemeral river. Yeah. Which rivers? No, they are different. दोनों में difference है. ठीक है. देखिए, एक होता है आपका पेरिनियल, एक होता है आपका सीजनल, एक होता है आपका एफिमेरल. जो पेरिनियल है उसमें होता है रिवर्स में पानी हमेशा रहेगा. हिमालयन रिवर्स आर योर पेरिनियल रिवर्स, PERENNIAL. ठीक है. जो हिमालयन रिवर्स जो आपकी जब आप पढ़ेंगे रिवर्स में भी ड्रेनेज सिस्टम में पढ़ेंगे तो हिमालयन रिवर्स आपकी क्या है? दीज आर योर पेरिनियल रिवर्स. योर peninsular river are your seasonal rivers, and there are some rivers who are ephemeral which is Luni. ठीक है. हाँ वो ड्राई हो जाती है. एफिमेरल रिवर का सिंपली मतलब है कि वो आपको मानसून के टाइम पे दिखेंगे एक्टिवली, यू कैन स्पॉट देम, बट फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर दे गेट ड्राइड अप. ड्राउट आ गया मतलब सीजन्स जैसे आपको मानसून से पहले नहीं दिखेंगी. फॉर इन द विंटर्स यू कैन दे just they disappear. That is the simpler version. आप simple लिख सकते हो. Ephemeral rivers are rivers which disappear. Yes, you can consider that. हाँ. But I'm not sure. We have to check the fact because see, in geography, some of the facts are either this or that. There is nothing gray in this. There is either black or white.
कोई ग्रे शेड एरिया नहीं है, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव आएगा तो या तो आप बोलोगी वो एफिमेरल है या वो सीजनल है, ऐसे नहीं बोल सकते ना, यू हैव टू स्टिक ऑन टू वन पॉइंट, बिकॉज ऑब्जेक्टिव में आपको एक ही मार्क करना होगा, कंफ्यूजन का स्कोप नहीं होता है। जब आप सब्जेक्टिवली लिखते हो किसी चीज को एक्सप्लेन करने में, तब आप वो ला सकते हो कि ठीक है, देयर इज अ स्पेस फॉर मैनिपुलेशन, देयर इज अ स्पेस फॉर द सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट, बट पॉइंट इज यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, so you have to learn the fact as it is. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, पार्ट ऑफ दिस प्लेन, फुल स्टॉप, सेकंड पॉइंट लिखिए, पार्ट ऑफ दिस प्लेन is a is a product of depositional activity, part of this plane is a product of depositional activity of the winds and recession of the sea, and recession of the sea, full stop. It contains the Gondwana rocks, it contains the Gondwana rocks, comma, resting over lower Cretaceous beds, resting over lower Cretaceous beds. अब इतने heavy terms हैं, so even I thought twice to give you these terms. See, there are two periods that I'm talking about here. One is your Cretaceous and another one is your what period? कार्बोनिफेरस। अभी पीरियड्स किसी ने करे नहीं है, जियोलॉजिकल पीरियड्स, जियोलॉजिकल टाइम, या किया भी होगा तो फिर आपको याद नहीं होगा, बिकॉज दीज आर द टर्म्स मोस्टली पीपल स्किप कर देते हैं, राइट, बिकॉज दे नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो आप सिंपली ये याद रखिए कि जो पहला मैंने आपको बताया क्या, जुरासिक रॉक्स, मतलब जुरासिक जो पीरियड आया था वो बाद में आया था, और जब वहां पे वो जो रॉक्स फॉर्मेशन हुआ वो बाद में हुआ। तो जैसे मैंने आपको बताया था, यू कंसीडर अ केक, केक के ऊपर यू विल कंसीडर अ क्रीम, तो जो केक का बेस है, तो कोस्टल प्लेन्स के अंदर जो बेस है, गुजरात कोस्टल प्लेन आई एम टॉकिंग अबाउट, द बेस इज योर क्रिटेशियस। ठीक है, ये पॉइंट आपको लर्न होता है तो ठीक है, नहीं होता तो स्किप कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। रेस्टिंग ओवर, फिर से आई एम रिपीटिंग, इट कंटेन्स, what did I say, can you repeat? हाँ, beds, हाँ, it contains Gondwana rocks resting over the lower Cretaceous beds. Write down. The eastern section of the Gujarat plain, the eastern section of the Gujarat plain is a projected jet, Jet. The eastern section of Gujarat plain is the projected jet of Sindhu Ganga alluvial tract, of Sindhu Ganga alluvial tract in peninsular India. This projection is the outcome of, this projection is the outcome of Pleistocene sedimentation. Pleistocene sedimentation. In simpler words, you can write down that in Gujarat plains, the part of the Gujarat plains, और करके लिख लीजिए इसी पॉइंट को, अगर कभी समझ में ना आए, राइट डाउन, और the Gujarat plains have been
formed due to Pleistocene sedimentation. Simple. Write down under it. Run of Kutch, which is a part of Run of Kutch. देखिए, this is your Gulf of Kutch. This one, this gap. Okay, this is your Gulf of Kutch. I don't have a Gujarat detail map here, otherwise I would have shown you. This is your Gulf of Kutch, and this is your Gulf of Khambat. नीचे वाला आपका Gulf of Khambat है. The above one is Gulf of Kutch. ठीक है? And where you are having a Run of Kutch in the this one, ये area, your Run of Kutch. ठीक है? Now write down Run of Kutch is an. You do have a map, right? Atlas है ना, दिखाइए. How many of you are carrying Atlas today? कितने लोग Atlas carry कर रहे हैं? खोल लीजिए. Online students who can open in their this phone. You can also open on your phone. I mean, they are at your home, so they can just refer to the books. That's what I meant. See, I'll come to you and tell you that what you have to see in this. ये देखिए, ये जो ऊपर वाला part है, this is your Run of Kutch, and this is your Gulf of Kutch. This is your Gulf of Khambat. अब जब कच्छ है, कहाँ कौन से वाले एरिया में है? It is here. ठीक है? और this is your काठियावाड़ पेनिनसुला, and this is your कच्छ पेनिनसुला. ठीक है? So ये आपका कच्छ पेनिनसुला है. This mark कर लीजिए इसको. Mark it. This is your कच्छ पेनिनसुला. This is your काठियावाड़ पेनिनसुला. ठीक है? And apart from that, the rivers that you were talking, this is your Sabarmati. Sabarmati is here. Can you see? Right? And this is how it is depositing. यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पे deposit हो रहा है. ठीक है? हाँ? Mahi is also here. Correct. Mahi is also here. See here. This is your Kutch. This is your Kutch. ठीक है? यहाँ पे Run of Kutch है, ऊपर देख रहे हैं आप. ये आपका काठियावाड़ पेनिनसुला. This is your Kutch. ठीक है? Can you see? आप आइडेंटिफाई कर पाए? नहीं कर पाए? अभी ये देखो यहाँ पे कच्छ पेनिनसुला ऊपर वाला, नीचे वाला काठियावाड़ पेनिनसुला. दिस इज योर रन ऑफ कच्छ. और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? ये देखो, ये रही आपकी साबरमती रिवर. कैन यू सी? दिस इज योर गल्फ ऑफ कच्छ ऊपर वाला, नीचे वाला गल्फ ऑफ खंबत. देख सकते हो ये हाउ दे आर फॉर्म्ड. ठीक है, गुड. So now you will have understanding. I think online students have also referred to the atlases at their home. अभी आप रेफर करिए राइट नाउ. ईशान, पीयूष. देखिए, you will not understand it through the maps, through Google Maps. जब Google पे आप मैप्स खोलेंगे, Google Maps का मतलब वो नहीं है. थ्रू गूगल इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो अलग अलग इमेजेस दिए हुए हैं. कहीं कहीं आपका पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है, बट एटलीस्ट के अंदर आपका हर डिस्क्रिप्शन दिया है. फॉर एग्जाम्पल, आपका रिवर्स भी एक्सप्लेन किया हुआ है. Then your peninsula has been explained, your Gulf has been explained, your Run of Kutch has been explained. हर चीज वहां पे explained है. इसलिए आई एम टेलिंग यू टू रेफर टू द atlas. Done. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ राइट डाउन. अब रन ऑफ कच्छ कौन सा प्लेस है? ऊपर वाला. ठीक है, नाउ यू नो द लोकेशन. अब लिखिए, रन ऑफ कच्छ इज एन एक्सपेंसिव ट्रैक ऑफ नेकेड टाइडल मड फ्लड्स. ट्रैक ऑफ नेकेड tidal mud floods. Naked tidal mud floods. I'm repeating. Run of Kutch is an extensive tract tract of naked tidal mud floods .
transected, 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 transected by abundant and live creeks, by abundant and by live creeks, 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 live creeks, live creeks. Now you will write down full stop. The Gulf of Kutch separates the Run of Kutch from Kathiawar Peninsula. People who have not opened the atlases, this is for them. अब ये देखिए, this is your, I'm just making the Gujarat's map right now. This is your Gulf of Khambat. नीचे वाला आपका Gulf of Khambat है. The above one is your Gulf of Kutch. Where is your Run of Kutch? This is your Run of Kutch. This one. This is your Kathiawar Peninsula. Can I say that Gulf of Kutch is separating the Run of Kutch from the Kathiawar Peninsula? Am I right if I'm saying this? So write down. The Gulf of Kutch separates, the Gulf of Kutch separates the Run of Kutch from Kathiawar Peninsula. From Kathiawar Peninsula. Full stop. The salt in the soil. The salt in the soil. Salt in the soil. The salt in the soil makes the low-lying marshy area almost barren, almost barren, almost barren, and unproductive, and unproductive. ठीक है, अब आ जाइए वेस्ट कोस्टल प्लेन पे. Just revise for a minute, 2 minutes, 3 minutes. Just look at what we have done so far, and then we will go with the west coastal plains. Please, isko, this is very important class for the prelims as well. Please do not take these classes lightly. अपने maps, अपने atlases सामने रखिए. Everyone, this is for the online students as well. I'm trying to go slow only because you can refer to the maps in between while you are writing if you have any doubt. और कल से आप भी लेकर आएंगे एटलीस्ट सारे स्टूडेंट्स क्लास में. सपना, यू आल्सो. दीपाली, बाय वन गुड एटलीस्ट. राहुल, यू आल्सो. ठीक है, रिवाइज कर लीजिए पूरा प्रीलिम्स हियर थ्रू दिस क्लासेस. Why are you laughing? Why are you laughing? What happened? क्या हो गया है? ज्यादा पढ़ के भी बहुत ज्यादा खुशी मिलती है. हाँ, बहुत ज्यादा. कितनी क्लासेस होगी सुबह से? 3 क्लासेस. कितने कितने घंटे की? मतलब मेरे अलावा 3 हुई है या फिर मेरे इंक्लूडेड 3 है? इंक्लूड करके. और हंस क्यों रहे हो इतना? हाँ, क्या हुआ? 1.5 3 या 3 क्लासेस हो चुकी हैं. दिस इज योर 2 आवर का क्लास अभी, मतलब 5 आवर टोटल. अब पूरा हो जाएगा. अच्छा, बीच के आप भी थी. अच्छा, कौन कौन सी क्लासेस चल रही हैं सुबह? सीसेट की तो आज थी नहीं ना आप लोगों की? फिर कितने बजे से?
15 के आसपास ना. अच्छा. There's another batch of mine. उनके वो I was just teaching them. So they said that this thing कि हमारी class है next. I wanted to extend 5 more minutes. So they said no, no ma'am, we have a class CSAT. And then they said कि अब class cancel. हाँ, कहते class cancel होगी. So I thought वो cancel होगी class. Okay, okay. ठीक है. Ask them to share the जो अच्छा. Okay, Piyush. Piyush, why are you not coming? Why are you taking online classes? So what happens is when Piyush comes and then the less number of students are there. When Piyush doesn't come, the more number of students are there. I don't know why it's happening like that. Come to the class. Now the students who used to take online have also come to the class. Welcome, Stapna. ठीक है. चलिए. अब वेस्ट कोस्टल प्लेन में जिसको राइट डाउन. इट लाइज बिटवीन सहाद्री. मैंने कल क्या बताया था? वेस्टर्न जो आपका क्या है घाट्स, उसका ही संस्कृत नेम क्या है? सहाद्री. ठीक है. इट लाइज बिटवीन सहाद्रीज एंड अरेबियन सी. इफ ऐसे सहाद्री अरेबियन सी तो भी सही है. इफ ऐसे वेस्टर्न घाट्स एंड योर अरेबियन सी तो भी सही है. लिखिए. इट लाइज बिटवीन सहाद्रीज SAHYADRIS. How is the weather in Uttarakhand, Tanishka? Because यहाँ ठंड होगी. Let me ask Tanishka can give me the live updates from Uttarakhand. Is she here? Tanishka is always active. Yes, ma'am. Yes. What is the update in Uttarakhand? कैसा है? What is the weather there? How is the Ma'am, weather there? amazing. Yes, ma'am, Amazing. it's very nice. Yeah, ma'am, it's हाँ. very cold actually. In the evening, like you have to wear a jacket or something if you're traveling through two-wheelers. Okay. So you must be having a good time there, huh? It's better than Delhi. Yes, ma'am. Because यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा ठंड आ गया. तो I was thinking कि वहाँ तो definitely better आपका टेम्परेचर better weather हो ही चुका होगा. Yes, ma'am, it's lovely here actually. You got back to your hometown at right time. Good. Huh, Enjoy yes. winters. चलो, let's go. अब करते हैं. It lies between Sahyadri and Arabian Sea. Full stop. It is about 1400 kilometer long. It is about 1400. ये डेटा याद रखेंगे. 1400. It is about 1400 kilometer long. It is about 1400 kilometer long. Hmm. 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 I can give you the motivation. Okay, right now. So if you study well, you will have a good snowfall during your training period in Labasna. Okay. So people who really enjoy winters, people who want to see snowfall, and that too in Labasna, then you have to earn it. ठीक है. So that could be a motivation. Put it on your wall. जो भी आपका जहाँ पे पढ़ रहे हैं वहाँ पे you can put it. जिन लोगों को ये motivation है कि नहीं अच्छा weather चाहिए और that too in Labasna, then definitely they should study well. Write down. It is about 1400 kilometer long and 10 to 80 kilometer wide. 10 to 80 kilometer wide. Full stop. It has an elevation of 150 meter above sea level. It has an elevation of 150 meter above sea level, comma, reaching more than 300 meter at places. क्या हो गया?
हाँ हाँ, नो 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 नो, वेस्ट कोस्टल प्लेन्स। आपने हेडिंग नहीं डाला? हाँ लिखो, तभी आप कंफ्यूज हो। लिखो वेस्ट कोस्टल प्लेन्स, उसका हम वी आर राइटिंग। आई विल रिपीट अगेन, it lies between Sahadri and Arabian Sea, full stop. It is about 1400 kilometer long and 10 to 80 kilometer wide. It has an elevation of 150 meter above the sea level, comma reaching more than 300 meter at places. मतलब 150 to 300 मीटर तक इसका एलिवेशन हो सकता है, इसका सिंपल मतलब ये है, ठीक है। The western coastal plain is characterized by, write down, the western coastal plain is characterized by sandy beaches, sandy beaches, comma, coastals, coastals, sand dunes, sandy beaches, coastal, sand dunes, coastal sand dunes, comma, mud floods, comma, lagoons, comma, alluvial tract along rivers, estuary, comma, laterite platforms, and residual hills, residual hills, estuaries and residual hills, ठीक है, फुल स्टॉप। तो सहाद्री ब्रैकेट में लिखेंगे, रन ब्रैकेट में लिखेंगे, एलिवेशन इज 752 ऑलमोस्ट 1255, राइट डाउन सहाद्री एलिवेशन, ब्रैकेट में एलिवेशन लिखेंगे 750 to 1255, run parallel to the plane, run parallel to the plane and present their steep face, and present their steep face to the lowlands with Thalghat and Borghat, with Thalghat and Borghat gaps in the north and Palghat gap in the south of, you missed something? कहाँ से मिस किया बताइए? Lowlands with Thalghat and Borghat gaps in the north and the Palghat in the south of Nilgiri, in the south of Nilgiri. इतना टफ नहीं है समझना, सिंपल सी बात ये है इसकी, that they are trying to say, यहाँ पे ध्यान से देखिए, look on the board at what I am trying to explain you. ये देखिए, ये आपका कोस्टल प्लेन है, ऑब्वियसली ये प्लेन से तो उनका एलिवेशन क्या होगा, ऑलमोस्ट 150 to 300, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, इट कैन वेरी। हियर यू आर हैविंग माउंटेन्स, योर घाट्स, योर रेंजेस, कैन आई कॉल देम, राइट? दिस इज योर सहाद्री, राइट? नाउ दिस सहाद्री इज हैविंग एन एलिवेशन ऑफ 750 to 1225 मीटर, यही इसका एलिवेशन है। Runs parallel to the coastal plain, which is my coastal plain. This is my coastal plain. It is running parallel to it. It is running parallel. How many of you agree with this? सही बात है. Running parallel to the coastal plain. What is the next line it is saying? Now, जो आपका पेनिकल क्या बताया था, वेस्टर्न घाट का स्टीप स्लोप कहाँ पर है, यहाँ पर है, और जेंटल स्लोप कहाँ पर है, लाइक दिस। तो स्टीप स्लोप किसकी साइड है आपका, ऑन द कोस्टल साइड। तो यही बात उसको बोल रहा है वो, सी इन द लाइन व्हाट इट इज सेइंग, steep face to the lowland, yes, to the Thalghat and Borghat. This is your Thalghat, कहाँ पर है, ऊपर ऊपर की साइड, यहाँ पे शो नहीं किया हुआ, आई हैव टू शो द थालघाट, कहाँ पे किस मैप में है, एक सेकेंड,
एस्टिमेट करके मैं आपको बता दूंगी अगर कोई इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ तो। मैप्स निकालिए अपने एंड स्पॉट थालघाट एंड बोरघाट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई कैन शो यू, लुक हियर। So here you're having your Halghat, then you're having your Borghat, and then you're having your Palaghat. Can you see the white color here? Your Thalghat, Borghat, and Palghat. अगर नहीं दिख रहा है online students, then please refer to the नहीं है, ठीक है। Can you spot it? यहाँ पे I can show again. This is your in Maharashtra, your Thalghat, then your Borghat, and नीचे आपका पालाघाट और पलक्कड़ गैप, ठीक है, पलक्कड़ गैप। कितने लोगों को दिखा, कितने लोगों को स्पॉट हुआ? अभी करेंगे एक्टिविटी क्लास में ही, बिकॉज अदरवाइज यू विल फॉरगेट इट। अगर मैप्स में नहीं दिख रहा है तो गूगल कर लीजिए। ये देखो, पालघाट इज हियर। हाँ ये वाला, दिस इज योर पालघाट। योर that is Borghat actually. Balaghat range is different. Do not get confused. Your Balaghat and Borghat are different. Please don't get confused. Balaghat range and Borghat, these are two different things. ब्रैकेट में अगर लिखना चाहते तो लिख लीजिए, बालघाट इज इन वेस्टर्न, योर वेस्टर्न घाट्स ऑफ महाराष्ट्र, it's in the western ghats of Maharashtra. Now write down, Borghat is again in Maharashtra, and your Palaghat is in Karnataka. Sorry, it's at the border of Kerala and Palaghat gap is in, हाँ गैप्स के अंदर है। यू कैन राइट इन द स्टेट्स ऑफ केरला एंड तमिलनाडु, नीलगिरी हिल्स, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कहाँ तक लिखा आप लोगों ने? नाउ राइट डाउन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे, कंटिन्यू करके नहीं, नेक्स्ट मतलब थोड़ा स्पेस डाल के लिखेंगे। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, राइट डाउन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन Ma'am, the the north northern part the of northern part of the western coastal plain, please correct it. The northern part of the western coastal plain is known as Konkan plain. Please give me my pen. आपके पास रहेगा, उधर उधर बोलो।
the northern part of the western coastal plain. दीपाली, are you getting the fact? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है you have doubt. कोई डाउट लग रहा है क्या? कुछ पॉइंट प्रॉब्लम है? कोई चीज आपको समझ नहीं? आस्क योर डाउट हियर ओनली. व्हाई आर यू नॉट आस्किंग? बताओ क्या इशू है? पक्का एवरीथिंग इज फाइन? ठीक है, गुड. So the northern part of the western coastal plain is your Konkan, Konkan, Konkan plains. The northern part of the western coastal plain is Konkan, Konkan, is about 530 kilometers. Class में, I'm in the class. Is western coastal plain कितना है? Is about 530 kilometer long and 30 to 50 kilometer wide. 30 to 50 kilometer wide. कंटिन्यू करके लिखेंगे. The southern part of western coastal plain is known as the southern part of the western coastal plain is known as Karnataka coastal plain. Write down Karnataka coastal plains is known as Karnataka coastal plains, which is about 525 kilometer long, which is about 525 kilometer long and 8 to 25 kilometer wide. 525, 525, that's it, 5 to 5 and 8 to 25 kilometer wide. ये सबसे नैरोवेस्ट पार्ट है जो कर्नाटका का आपका कोस्टल प्लेन है. ये नैरोवेस्ट पार्ट है आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का. अगर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात हो तो यहाँ से ब्रॉड होके एंड देन दे आर वेरी वेरी नैरो, दे गॉट डाउन एंड दे गेट नैरो. ठीक है, राइट डाउन. इट इज द नैरोवेस्ट पार्ट ऑफ द वेस्ट कोस्टल प्लेन. Full stop. Further towards the south, there is Malabar coast, which is 550 kilometer long and 2200 kilometer wide. 2200 kilometer wide. Ma'am, please can you repeat again? Yes. Just further towards the south, there is Malabar coast, which is about 550 kilometer long and 2200 kilometer wide. Next, this coast is characterized by sand dunes. This coast is characterized by sand dunes. फुल स्टॉप. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर एक्सप्लेनेशन आएगा आपका वेस्ट कोस्टल प्लेन में, यू नीड टू राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स, और कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको ये सब बताना है कि व्हाट एल्स इज फाउंड हियर. राइट डाउन द मैक्सिमम एक्सटेंशन. आपने लिख लिया. देन राइट डाउन दिस कोस्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सैंड ड्यून्स. फुल स्टॉप. Along the coast there are shallow lagoons and backwaters. There are shallow lagoons and backwaters such as kayaks. केरला में एक वर्ड सुना होगा आपने, कयाक्स. बहुत ज्यादा इसका डिस्क्रिप्शन भी था न्यूज़पेपर्स में. कयाक्स एंड तेरीज. एंड यू नेवर नो
दैट आपका कयाक्स पे क्या आ जाएगा क्वेश्चन, जो आपका पेपर 2 में डेफिनेटली आता है, 1 ऑप्शन बी सी डी, एंड उसके नीचे एक पार्ट आ जाएगा कयाक्स, एंड यू विल बी वंडरिंग कि कयाक्स का मतलब क्या है. यू हैव टू राइट अ डिस्क्रिप्शन अबाउट कयाक्स. सिर्फ एक वर्ड में आएगा कयाक्स, एंड देन यू हैव टू राइट एंड स्पॉट इट ऑन द मैप. तो कयाक्स कहाँ का है, फॉर एग्जाम्पल केरला का है, तो यू हैव टू मार्क इट देयर. ठीक है, सो एक एक वर्ड पे ध्यान से फोकस करेंगे. कयाक्स एंड तेरीज, TERIS, तेरीज. नाउ योर असाइनमेंट इज टू write about kayaks and ferries. Write down the assignment separately. Write down the assignment separately. Prelims के लिए भी important है और geography option के description के लिए भी. Write down. What do you understand by kayaks and ferries? What do you understand by kayaks, KAYAKS, and ferries, TERIS? Write down. These lagoons are linked together. These lagoons are linked together to facilitate navigation. These lagoons are linked together. Lagoons are linked together to facilitate navigation. Navigation को underline करेंगे. Facilitate navigation को underline करेंगे. And here Vembanad and Astamudi. Here Vembanad. Vembanad is it's a river also. Vembanad is a river also, right? In yes, Vembanad Lake, correct. So it's in Kerala only, no? हाँ, तो केरला ही तो बोला मैंने. अच्छा, okay, हाँ. So Vembanad and what else I have said? Vembanad and Astamudi. Write down. Astamudi. Vembanad and Astamudi are important lagoons of Malabar coast. They are important lagoons of Malabar coast. Write down. It is a homeland to aquatic life like crabs, frogs, birds, and turtles. एक और पॉइंट लिखिए बैक वाटर्स के बारे में. जहाँ पे असाइनमेंट लिखा है वहां पे एक और पॉइंट लिख लीजिए बैक वाटर्स. अब आपके 3 पॉइंट्स हो गए. यू हैव टू राइट अबाउट कयाक, सेरीज एंड बैक वाटर्स. थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में बैक वाटर्स का दे रही हूँ. थ्रू इट राइट डाउन. द बैक वाटर्स आर इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट. इसी में कंटिन्यू करके लिखेंगे और असाइनमेंट को सेपरेटली बैक वाटर्स लिख दीजिए. द बैक वाटर्स आर इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स and are of importance for transportation, fishing, and even agriculture. Full stop. The region has deposits of monazite. The region has important deposits of monazite. Monazite is used in nuclear reactors. And monazite में क्या है वहां पे? What do you find there? Thorium, right? In Kerala, radioactive elements, right? Write down the region. Have you seen that Rocket Boys? It is the whole web series is about this only. That they keep on talking about monazite in Kerala, and we find it here only. In UPSC 2023, this question was asked. If somebody would have seen that, it could have easily done that question. The region has the deposits of monazite sand, which is reddish brown
enrich in phosphate. Now your task is in 5 minutes you have to do this 3 or 2, whatever you can do, these assignment, this one. I know you must have not done the previous one also. थोड़ा सा किया है ना, पूरा क्यों नहीं किया? अब आपको क्या करना है, कयाक्स theories and इसमें 50-50 वर्ड्स लिखने हैं. You have I think 5 to 8 minutes are fine to do that. Quickly you have to do it. अब फिर आपका एक बचेगा एक ही टॉपिक which is Eastern Coastal Plain that we have to cover. That is the target. पहले आप 8 minutes में वो complete करिए.
कहाँ पे किया आप लोगों ने? Kyal is done. Kyaks. It's kyaks. No, no. I said K-A-Y-A-K-S. मैंने क्याक्स बोला था आपको, नॉट एल. वो भी कुछ होता होगा, पर मैंने आपको क्याक्स बोला है. K-A-Y-A-K-S. ओके, हैव यू डन? ठीक है, चलिए. लेट्स मूव टुवर्ड्स द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. हाँ, तभी मैंने आपको दिया है. दीज आर द बोर्ड्स आल्सो, तनिष्का. दैट्स व्हाट आई हैव गिवन. दैट्स व्हाई आई हैव गिवन दिस. I know there's a form of the boats are used in the form of a sport. There's a sport that they have in Kerala. Okay? So it can come in that way also. Okay, so you can write about both kayaks and kayaks, both. Write down both kayaks and kayaks. And theories also. We'll have a discussion. Now, quickly moving to Eastern Coastal Plain, that is the last one for the today. अब Eastern Coastal Plain में लिखिए. Write down. Write down in Eastern Coastal Plain. The eastern coastal plain lies between Western Ghats, between Eastern Ghats and the Bay of Bengal. The eastern coastal plain lies between Eastern Ghats and Bay of Bengal and stretches along the coast of Odisha, Andhra Pradesh and Tamil Nadu, and stretches along the coast of Odisha, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Full stop. These plains are formed by the alluvial fillings of littoral zone. These plains are formed by the alluvial fillings of littoral zone comprising the largest deltas of the world. Full stop. The east coastal plain consists mainly of the east coastal plains consist mainly of the east coastal plains consist mainly of recent and tertiary alluvial deposits. Recent and tertiary alluvial deposits. Recent and tertiary alluvial deposits. Underline both the words. Full stop. They are gentle, monotonous plains. They are gentle, monotonous plains. Gently monotonous plains rising gently to the rising gently from westwards
to the foot of the eastern ghats. From westwards, rising gently, यहाँ से rise करेंगे and then they will drop. ठीक है, gently to the east of the eastern ghats. ठीक है. Next, write down the monotony of topography is broken by the presence of numerous hills. Monotony of the topography is broken by numerous hills. मतलब बहुत ज्यादा hills हैं तो क्या होगा, जिस monotony, जैसे ये plains चल रहा है आपका तो बीच में hills आपको मिलेंगी, तो ये आपका plains पूरा एक तरह से नहीं रहेगा, बीच में आपके hills होंगे. It's broken by the numerous hills. The coastal plain has a straight shoreline. The coastal plain has a straight shoreline. SHORE. They have a straight shoreline. The coastal plain has a straight shoreline with a well-defined beaches of sand. With a well-defined beaches of sand. Example में लिखेंगे. Example में लिखेंगे. For example, beaches in Chennai. For example, beaches in Chennai, which is Marina Beach. MARINA. Marina Beach. Next, write down. All along the coast, there are several sandbars. All along the coast, there are several sandbars. जहां पे आपने असाइनमेंट ऐड किया है वहीं पे ऐड करिए. Which types of minerals are found in? Write down. Which types of minerals are found in or near the sandbars of Tamil Nadu? Which type of minerals are found in or near the sandbars of Tamil Nadu? ठीक है. All along there are several sandbars generally in front of river mouths. There are several sandbars generally in front of the river mouths. Write down the next line. They are some of the important lagoons of India along the eastern coast, of which Chilika in the southwest of Mahanadi Delta is the biggest lake in the country. It's the biggest lake in the country. Full stop. The Kuleru Lake lies between the deltas of Godavari and Krishna. While Pulicat Lake lies further south on the border of Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Andhra Pradesh and Tamil Nadu lies Pulicat Lake further lies to the border of Andhra Pradesh and Tamil Nadu. तो पुलिकेट लेक कहाँ है आपका? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे, यहाँ पे आपका पुलिकेट लेक है. उससे ऊपर क्या है आपका? कोलेरू लेक. कोलेरू लेक कहाँ है? जिससे आप पुलिकेट आप मार्क कर सकते हैं. ये छोटी छोटी चीजें प्लीज मार्क करके रखिए. देन उससे ऊपर क्या है आपका?
You have कोलेरू लेक. कोलेरू लेक कहाँ पर है? Can you give me the description जो मैंने आपको लिखवाया है? हाँ हाँ, आंध्र प्रदेश बोलिए इसको. Why you not saying आंध्र प्रदेश? और क्या लिखा है इसमें? नहीं, आंध्र प्रदेश. इसके अलावा कुछ और डिस्क्रिप्शन लिखवाया है? कोलेरू लेक, गोदावरी एंड एट द डेल्टा ऑफ महानदी रिवर. अब योर टास्क इज टू गो बैक एंड जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है वो भी, और ये सारा चीजें. फॉर एग्जाम्पल चिलिका लेक के बारे में यू कैन सर्च मोर अबाउट कोलेरू, डेफिनेटली अबाउट पुलिकैट. You can write 50-50 answers if you want to. This is your complimentary 50 words you want to write on this, so that is a complimentary. If you want to write, that's fine, I won't be asking, but definitely जो आपको 3 मैंने आपको पहले assignment दिया 4. इतना शो कहाँ से आ रहा है? Too much of noise coming. ठीक है. Are you getting the class? Are you getting the point, everyone? You are? I don't know. It's Asha, after the class I'll show you. Here. Maybe that must be a mistake. I'm sure there could be a mistake, because I was also thinking this thing. Kyaks is this thing. It's a sport which is played. So that is what. But you can write about both. दोनों के बारे में लिखिए. अच्छी बात है. More assignment you do, the more confusion that you are having. उससे क्या होगा, ज्यादा आपको clarity मिलती है चीजों के बीच में. और then you will never forget. आज के बाद you will never forget. Why? Because you have done your research work. Any doubts? Online class? अच्छा, जितने मैप्स हो सके प्लीज, जो भी आंसर्स आप लिखेंगे उसके अंदर मैप्स जरूर बनाएंगे. ट्राई टू मैप. आपको ज्यादा नहीं, यू हैव टू डू दिस. यू हैव टू जस्ट ड्रॉ एंड मेक अ स्टेट. इस तरह से आप स्टेट का एक सिलुएट थोड़ा सा बना सकते हैं. यू कैन ड्रॉ लाइक जस्ट outline of it, and under the outline you can just mention it. और उसके बाद कुछ डिस्क्रिप्शन उसके लिख सकते हैं. and try to write in limited words. 50 words ही मुझे चाहिए. I don't want more than that. ठीक है. Thank you so much, class. Answers you have written पहले की? Yesterday's. ठीक है. Thank you. Stapled I'll do. ठीक है. हाँ. Actually my schedule is packed. Like in the morning I have a class, 2 classes, and then इस वजह से I'll talk about it. ठीक है. Thank you so much.